अरे हो गया है? अरे सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, फिर से बोल रहा इस हूँ, ये सर डाउट था डिस्चार्जिंग, देखो, यस सर। डिस्चार्जिंग। देखो E1 R1 E2 R2 discharge current is discharging from these two cells, therefore this is what the discharging formula. This one I am putting VAB is the net potential, VAC plus VCB, V is equal E minus IR, VCB is E2 minus IR2, because this is the discharging formula, current is discharging from this one. So VAB is equal E1 plus E2 minus I into R1 plus R2. Now E1 plus E2 is what? E equivalent minus I into R1 plus R2 is what? R equivalent. This is what? VAB. Try to understand this. This is also discharging formula for the combination of cells. Discharging formula for combination of cells. तो मेरा equivalent कितना आया? देखो. Therefore, in series combination, E equivalent is your E1 plus E2 and R equivalent internal resistance है R1 plus R2. This is what for the shortcut for the problem. Means equivalent EMF in series combination is E1 plus E2. Equivalent internal resistance is what? R1 plus R2. Equivalent internal resistance is R1 plus R2. Is that clear? R equivalent is R1 plus R2. E equivalent is E1 plus E2. Is that clear? They understand this? Clear about this? लिख दिया? Now, you see, if you reverse the what polarity of the cells, what will happen? You are reversing the polarity of the cell. Then what will happen? Try to understand this. Note में लिखो. If the polarities are reversed, note में लिखो. ये भी एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है. थॉट सेक्शन में कितना है? Write down. If polarities are reversed, if polarities are reversed, polarities are reversed, then what will happen? Reverse polarity means plus minus minus plus. तो रिवर्स कर दिया मैंने. Having E1 internal resistance R1, this is E2 internal resistance R2. Then what is the equivalent EMF? Then the equivalent EMF will be E1 minus E2 हो जाएगा and mod is always positive. इक्विवेलेंट ईएमएफ अभी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा. E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, सॉरी E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 का मॉड ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव. एंड R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 हो जाएगा. R इक्विवेलेंट है, R equivalent is R1 plus R2 and E equivalent is E1 minus E2. If you reverse the polarity, you are going to get like this. Is that clear? अरे समझ में आ रहा है? यस ओके, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखो. नेक्स्ट इज नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन. डिफरेंट ईएमएफ का पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये भी गिरता है 3 मार्क्स सेक्शन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. देखो, cell having different EMF and internal resistance, I am combining in parallel. This is what E2, this is what R2. I am combining in parallel. Clear? ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है, करंट डिवाइड्स. तो इसमें मेरा करंट जा रहा है, इसमें मेरा करंट I1 जा रहा है, इसमें मेरा करंट I2 जा रहा है एंड नेट करंट I इसमें फ्लो हो रहा है. डायग्राम ड्रॉ करो. ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है. Draw the diagram. Completed diagram. Completed diagram. Completed. Now write down. Yes, sir. देखो. यस Now I1 is what? I1 sorry, इसमें लिखोगे E1 is what? Or we can say VAB, potential across AB is what? E1 minus I1 R1. अभी I1 निकालूंगा कितना है? तो I1 R1 is equal what? E1 minus VAB एंड I1 कितना आएगा? I1 मेरा आ रहा है
E1 by R1 minus VAB by R1. Similarly, what is I2? Write down. Similarly, I2 is what? I2 is what? E2 by R2 minus VAB by R2. Understand this? Now, net current is I. लिखो. हो गया? I1 मिल गया, I2 मिल गया. Net current is I. I is the net current. I is equal I1 plus I2. Net current I1 is what? E1 by R1 minus VAB by R1 plus E2 by R2 minus VAB by R2. Now you see, this is what I can write: E1 by R1 plus E2 by R2 minus VAB, take out common, 1 by R1 plus 1 by R2. And if you take this as LCM here, R1 into R2, you are going to get E1 R2 plus E2 R1 minus VAB. This is what? R1 plus R2 by R1 R2. मुझे पोटेंशियल फॉर्म में लिखना है इसी को. So this is what? VAB into R1 plus R2 by R1 R2 is equal E1 R2 plus E2 R1 by R1 R2 minus I. Understand this? So VAB is how much? लिखो इसको. Write down. Sir, minus I came from where? Where? Minus I, yes. Minus I. Moving to left side, I is moving to right side. अरे VAB is moving to left side, that therefore it is plus VAB. Yes, I sir, is yes, sir, moving sir, towards right I- side, इसलिए Yes, minus. sir, yes, sir. Yes. लिख दिया. Completed. एंड जो MCQ नहीं किए हो, करो, कल डिस्कशन होगा MCQ. उसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ फॉर्मूला, जो दोनों में डालोगे, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में, दोनों में डालोगे. जहाँ जहाँ पोटेंशियल है किरचॉफ लॉ डाल पाओगे. तो VAB इज इक्वल व्हाट? VAB कितना आएगा? E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 इंटू, और ये समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट करने से शायद, तो पूरा लिखेंगे स्टेप को थोड़ा, माइनस आई डिवाइडेड बाय, look here, divided by R1 plus R2 by R1 R2. Write down. So now solve this and get the answer. If you'll solve this, what will get? This is what VAB. This is what E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2 into R1 R2 by R1 plus R2 minus I into R1 R2 by R1 plus R2. Is that clear? This getting cancels out. Now finally, what will happen? VAB is equal, what is that? E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2 minus I into R1 R2 by R1 plus R2. So this is what here I can calculate equivalent EMF and what? Internal resistance. लिखो. ये derivation definitely गिरता है एग्जाम में. ये जिस एग्जाम देखो उसी एग्जाम में डेफिनेटली डेरिवेशन गिरता है. हर एक साल में गिरता है, ये सभी एग्जाम में ही गिरता है CBSE में डेरिवेशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर E इक्विवेलेंट इसमें कितना है? E इक्विवेलेंट इज E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent is what? R1 R2 divided by R1 plus R2. This is what we are going to get. Is that clear? Understand this? This is E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 and R equivalent is R1 R2 by R1 plus R2. Is that clear? We got this or not? Hello? अरे समझ में इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालना है? हेलो, लिख दिए? Yes, sir. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
Equivalent Sir, EMF. 1 minute. Likho, likho.